Hello students, our chapter 2 from gathering to growing food finished. Now we start our study note. Question 1. Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? जो भी पीपल थे वो जब क्रॉप्स ग्रो करती थी तो उसको वही टाइम पे वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे रहने की क्यों ज़रूरत होती थी? Answer. People who grow crops have to stay in the same place for a long time because the field had to be looked after, the plants had to be watered, and plants had to be protected from birds and animals so that they could grow and the seeds would ripen. जो भी ग्रो करते थे क्रॉप्स को उसकी वो जो केयर करनी होती थी, उसको वाटरिंग करना होता था, वीडिंग करनी होती थी, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनको वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहना पड़ता था. Now question 2. Look at the table on the page 25 of the textbook. If Nyo wanted to eat rice, which are the places she should have visited? अगर उसको वो जो राइस खाना है तो उसको कौन से प्लेसेस को विजिट करना पड़ेगा? आंसर इज ये जो चैप्टर पेज नंबर 25 पे दिया गया है. ओके. Now, if Nyo wanted to eat rice, अगर उसको राइस खाना है, she should have gone to the state of the West Bengal, क्योंकि वेस्ट बंगाल है वहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं. अ मेजर राइस प्रोडक्ट एरिया, सबसे ज़्यादा राइस वहाँ पे ग्रो होते हैं. नाउ क्वेश्चन 3. वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट्स थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन द मेरगर were hunters to start with and that herding become more important later? The answer is archaeologists think that many people who lived in the Mehrgarh were hunters because they have found bones of many kinds of the animals from the earliest level. पहले के ज़माने में वहाँ पे वो जो bones थे वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे animals के मिले थे. These include bones of the wild animals such as the deers and the pig. In later levels, they found more bones of the sheep and goat, and in still later levels, cattle bones and more common. पहले वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स मिले थे, जैसे कि एग्जांपल डियर, पिग. उसके बाद वहाँ पे सीप, गोट्स के भी बोन मिले थे. उसके बाद वहाँ पे विलेजेस था कि वहाँ पे ये ज़्यादा बोन्स फाउंड किए गए थे. Question 4. State whether the true and the false. First question. Millets have been found at the Hallur. Answer is a true. People in a Buzam lived in the rectangular houses. False. Question C. Chirend is a site in a Kashmir. False. The D question. Jadeite found in the geology heading may have been brought from the China. द आंसर इज ट्रू. ये जो सारा है वो जो मैप 2 दिया गया है उसमें दिया गया है. नाउ वी स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर सम ऑफ द रीजन गिवन फॉर द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नियोलिथिक एज? द आंसर इज many reasons have been given for the beginning of the agriculture. One of the most important reason was the fact that farming began with the वार्मिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. पीपल लर्न द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फूड. पीपल को फिर स्लोली टेक्निक है वो समझ में आने लगी थी. soon this became a way of life as the demand for a food could not be met by hunting and gathering alone. ये जो गैदरिंग एंड जो हंटिंग होता है उससे वो जो डिमांड थी वो जो फूड की वो जो ग्रो करने लगे थे फिर वो ज़्यादा डिमांड में आने लगा था. ओके. नाउ द क्वेश्चन बी. राइट अ नोट ऑन द नियोलिथिक टूल्स. नियोलिथिक टूल्स वेर मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एंड द बोन. वो जो पॉलिश किए गए स्टोन थे वो पहले के जो स्टोन थे पहले के ज़माने के उनसे बहुत ही अच्छे स्टोन थे और बोन थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक टूल वॉज हेल्ट विच वॉज यूज्ड टू फेल ट्रीज एज फार्मिंग बिगन. टूल्स ऑल्सो इंक्लूड plows, sickles, axes. Besides these मोटर्स एंड द पेस्टल फॉर द पर्पज. ये बहुत सारे वो जो स्टोन्स थे वो यूज़ होते थे. कुछ भी ग्रेनिंग करना हो प्लॉप्स के लिए यूज़ होते थे. ओके. नाउ द क्वेश्चन सी. राइट अ नोट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज. ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड पीपल बिगन टू लिव इन द ग्रुप्स. दिस सून डेवलप्ड इनटू द ट्राइब्स. The new social life of the people led to the division and the specialization of the labor.
वो जो नई लाइफ थी उसमें क्या था, वो जो डिवीज़न और स्पेशलाइजेशन हुआ था लेबर। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द वेरियस ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई थी। एंड ईच ग्रुप बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक टास्क, सारे लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल थे वो जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते थे उसके लिए। न्यू कस्टम सच एज द बायरिंग द डेड रिचुअल्स एंड द सेरेमनीज ऑल्सो इमर्ज्ड। यहाँ पे वो जो रिचुअल्स थे वो सारे वो जो डेड हो जाती थी उसके ऊपर जो वो करते थे वो भी सारा यहाँ पे नया आया था। क्वेश्चन डी, राइट अ नोट ऑन द नियोलिथिक साइट ऑफ द मेरगढ़। मेरगढ़ इज एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन द पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान में फिर इट डेट्स बैक टू अबाउट 6500 BC, फाइंडिंग द फ्रॉम द साइट सो दैट द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स कल्टिवेटेड वेट एंड बर्ली एंड केप्ट हर्ड्स एंड ऑफ कैपिटल एंड द सीप। वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, वो जो वेट एंड बर्ली थे वो वहाँ पे वो ग्रो होने लगे थे। देन हर्ड्स था, वो जो कैटल एंड द सीप थे वो भी वहाँ पे नया आया था। पीपल इन दिस सेटलमेंट लिव्ड इन द मड हाउसेज, वो जो मड के हाउसेज थे उसमें रहने लगे थे। हिस्टोरियंस है ऑल्सो डिस्कवर्ड, हिस्टोरियंस ने वो जो सारी एक बात भी बताई थी, बेट ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ द सी सेल, लाइमस्टोन, टर्कोइज, lapis lazuli, sandstone and polished copper from the side। ये जो अलग अलग is, thank you students।